Hello, everyone. Welcome back and good morning. Today, we are going to talk about another poem by Browning, which is Prospice. Okay? Yes. 1861, it was composed and it was published in Dramatis Personae. एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की डेथ के जस्ट बाद इन्होंने ये वर्क लिखा था. प्रोस्पाइस इज लैटिन फॉर लुक फॉरवर्ड एंड इट इज ब्राउनिंग्स डिफायंट मेडिटेशन ऑन डेथ. एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग एंड ब्राउनिंग का जो रिलेशन था, इट वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप. अदरवाइज हम लोग मोस्टली देखते हैं राइटर्स का रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स. तो चलो, अप्स एंड डाउन्स इज एवरीवेयर, बट separated, another wife, then another wife, then another husband. But Barrett Browning and Browning were very good together, and he was devastated after the death of Barrett Browning. So it is his meditation on death, on suffering, and ultimate reunion with the beloved. It is not elegiac in tone, but it's not mourning per se. It presents death as a final battle, which has to be faced with courage and heroic resolve. It's very difficult, and when your loved one goes away, it's very, very difficult to just be okay with it. But that's what it is about. You have to face it with courage and heroic resolve. So the themes are of death as combat. तो death एक battle की तरह present किया गया है. Death is imagined as a violent storm. battlefield है और वो हमारी endurance का test है. तो ब्राउनिंग रिजेक्ट करते हैं पैसिव रेजिग्नेशन को, और इंस्टेड ही एम्ब्रेसेस एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन कि हमें एक्टिवली डेथ को कन्फ्रंट कैसे करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है. एंड द स्पीकर डिमांड्स दैट द वर्स्ट कम फर्स्ट, रिफ्यूजिंग ग्रेजुअल डीके. उसके बाद अनदर थीम इज fearlessness and stoic courage. फियरलेसनेस एंड स्टॉइक करेज. तो जो स्पीकर है वो वेलकम कर रहे हैं पेन को और स्ट्रगल को, डिक्लेयरिंग रेडीनेस टू फेस डेथ हेड ऑन, कि मैं तो फेस करूंगा इसको वट एवर मे कम, एंड ही इज नॉट रेडी टू जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग. उसके बाद लव बियॉन्ड डेथ. एक होप है कि मैं दोबारा अपनी बिलवड से मेरी रीयूनियन होगा. इट्स वाइडली रेड एज एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग. लव ट्रांसेंड्स mortality and gives meaning to suffering. विक्टोरियन फेथ और ऑप्टिमिज्म की इसमें इन्होंने बात की है. तो टोन बहुत डिफाइंट है कि आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट गिव अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट मोर्न, आई एम गोइंग टू फेस इट विद करेज. एंड it's very heroic. The mood is very intense, very urgent, and it is first person dramatic monologue, though less theatrical than Browning's early monologues. ठीक है, ये सब imageries हैं. कोई रेगुलर स्टैंजा फॉर्म नहीं है. एब्रप्ट रिदम्स हैं which mirror the struggle against death, and there's a rapid movement from chaos to clarity which reflects the journey from suffering to spiritual assurance. एक बार हम अब पोम पे चलेंगे. Not a very long poem. इसकी एक फेमस लाइन है जो लास्ट लाइन है, which is, "O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with thee, with God be the rest." We'll come to that line, but first, let's look at a few lines and then talk about it. Okay. So, Robert Browning's Prospice. Fear death? To feel the fog in my throat, the mist in my face, when the snows begin and the blasts denote I am nearing the place, the power of the night, the press of the storm, the post of the foe. Where he stands, the arc fear is a visible form, yet the strong man must go. Fear death, first line. Fear death, to feel the fog in my throat. तो स्पीकर जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क में, जो स्पीकर है वो चैलेंज कर रहे हैं इस आइडिया को कि डेथ से डरना है नहीं. फॉग इन माई थ्रोट,
सजेस्ट सफोकेशन। वो घुटन सी हो जाती है ना जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, यहाँ जैसे कुछ हो जाता है। एंड दैट फिजिकल डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद डाइंग एज इफ समथिंग वेरी बैड इज हैपनिंग अराउंड यू, especially the fear of breath failing. So, fear death, to feel the fog in my throat, the mist in my face, and this continues the image of disorientation and obscurity. Ki death brings confusion and it brings loss of clarity. कि पूरा मेरे मुंह के आगे जैसे मिस्ट सा हो गया हो, सब कुछ फॉगी हो गया हो, both physical and mental. When the snows begin and the blasts denote, तो snows and blasts ये क्या symbolize कर रहे हैं? Cold, snow, cold, or blasts, violence, harsh natural forces. So they indicate the onset of death as an overwhelming and hostile experience. कि जब बर्फ शुरू होती है and the blasts denote I am nearing the place. तो snow और blasts क्या denote करते हैं कि अब मेरा टाइम आने वाला है. I am approaching death. The speaker recognizes that he is approaching death, the final destination of life's journey. The power of the night, the press of the storm. तो नाइट एंड स्टॉर्म अगेन जो इमेजरीज को हमेशा आपने देखना है पोम में, नाइट और स्टॉर्म डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फियर, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं ये. तो डेथ को भी पर्सोनिफाई किया है एज अ पावरफुल एंड वेरी अग्रेसिव एडवर्सरी. द पोस्ट ऑफ द फो, तो डेथ को इमेजिन किया गया है. फो क्या होता है? एनिमी. डेथ इज इमेजिन्ड एज एन एनिमी स्टैंडिंग गार्ड एट अ फिक्स्ड पोजिशन, like a sentry on a battlefield. Where he stands, the arc fear is in a visible form, yet the strong man must go. So death यहाँ पे एक, it becomes arc fear, supreme embodiment of all human terror, made concrete and confrontable. Despite fear, despite danger, एक courageous person को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, yet the strong man must go. तो इन few lines में death को represent किया है, but at the end he says a strong man must go on, must proceed. Strength is defined by the willingness to face death directly. It's okay, it's going to come, so face it with courage. फिर next lines है, for the journey is done and the summit attained and the barriers fall, though a battles to fight ere the guerdon be gained, the reward of it all. तो क्या कह रहे हैं? For the journey is done and the summit attained. लाइफ का जर्नी हो गया, you have climbed, summit end आ गया, completion आ गया, achievement, not failure. And the barriers fall. So जो भी obstacles थी लाइफ में, between life and death, अब वो खत्म हो रही हैं. Now you're approaching death. तो resistance का कोई point नहीं है. Resistance is no longer necessary. Though a battles to fight at the guerdon be attained. So although life का जो journey है वो complete हो गया है, लेकिन एक final battle, एक final struggle बाकी है, which is death itself. It remains before the reward can be achieved. And the reward of it all. तो ये सारी चीज़ों का, पूरी लाइफ का आपका ये रिवॉर्ड है. The reward refers to spiritual fulfillment and reunion beyond death, not material success. फिर कहते हैं I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. कह रहे मैं तो हमेशा से एक फाइटर रहा हूँ, हमेशा मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स रही हैं. अब एक और सही, डेथ इज सिंपली द फाइनल कॉन्टेस्ट. तो कोई डिफरेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट. इट्स जस्ट लाइक द अदर थिंग्स दैट यू फेस्ड इन लाइफ. डेथ भी वैसा ही है, बेस्ट वन, लास्ट बैटल, ग्रेटेस्ट, बिकॉज आपको इटर्नल पीस मिल जाएगा एंड मे बी यू विल बी रीयूनाइटेड विद योर लव्ड वंस. आई वुड हेट दैट डेथ bandaged my eyes and forbore and bade me creep past. तो कहते हैं मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. आई वुड हेट इट कि डेथ मुझे ऐसे सिडेटेड हालत में मिले या मैं मेरी आंखें बंद हों. डेथ दैट वुड ब्लाइंड हिम टू दैट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ. एंड बेड मी क्रीप पास्ट. क्रीप implies cowardice, avoidance. So the speaker despises this idea of slipping into death unnoticed. भाई ऐसे ही चले गए, ऐसे नहीं जाना है. No, let me taste the whole of it, fare like my peers, the heroes of old. कहते नहीं, मुझे भी पूरा का पूरा डेथ को टेस्ट करना. I want to experience it all, just like my peers, just like my friends, my equals have faced it heroically.
the heroes of old. So this recalls classical epic warriors who faced death bravely, reinforcing the heroic tone. Bear the brunt in a minute, pay glad life's arrears of pain, darkness and cold. To bear the brunt मतलब उस चीज को जो वर्स्ट है उसको सामने से फेस करना. In a minute, pay glad life's arrears. So life के arrears of pain are to be paid in this one intense moment. Arrears of what? Of pain, darkness, and cold. For sudden, the worst turns, the best to the brave, the black minutes at end, and the elements rage, the fiend voices that rave shall dwindle, shall blend. कह रहे हैं, for the courageous, for sudden the worst turns the best to the brave. To extreme suffering, it leads to transformation and victory. The black minutes end at end. तो जो darkest moment है death का, बहुत छोटा है, temporary है. And the elements rage, the fiend voices that rave. जो chaos है, fear है, imagined demonic voices हैं death की, वो सब temporary illusions हैं. अब वो सारी चीजें जो है they will dwindle, they will blend. These tears gradually will lose their distinct power and they will fade. They will change. Next line is shall change, shall become first a peace out of pain. So the suffering will transform into peace. एक spiritual resolution हो जाएगा. Then a light, then thy breast. तो peace gives way to enlightenment. और फिर इस पूरी चीज के बाद you will face the light again. Finally, you will be reunited with the beloved. Then thy breast. O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. तो ये लास्ट 2 लाइन्स बहुत ही इमोशनल लाइन्स हैं जो एक्सप्रेस कर रही हैं कि ठीक है ये सब होने के बाद एट लास्ट thou soul of my soul, I shall clasp thee again. I will be with you again. There's a certainty of reunion with Elizabeth Barrett Browning, if you read between the lines, transcending death, and with God be the rest. So the poem ends with spiritual assurance. Rest comes through divine union, completing the journey of the soul. Okay? So this is the entire poem. A very powerful dramatic lyric it is, in which or dramatic monologue bolna isko it's not appropriate because it's not really, it doesn't qualify as a major dramatic monologue. ठीक है dramatic है थोड़ा सा, लेकिन of course it is a monologue, more of a lyric, in which Browning confronts the idea of death with fearless determination और एक heroic resolve के साथ. 61 में लिखा था after the death of his wife, and the poem transforms this personal grief into a bold affirmation of courage, spiritual faith. तो मैंने छोटा सा एक लिखा है समरी आपके लिए, इसको आप रीड करिएगा. इफ यू आर राइटिंग, जैसे आई आस्क्ड यू टू राइट एवरी डे, दिस विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग योर आंसर. ठीक है, so that's about the poem. See you in the next one.